basically we will be starting integrals today. Okay. Or we can say integration also. Yes or no? So, like first, as you know, that I will be discussing the syllabus with you. Like there are some deleted portions, right? Am I audible? So see, first I will talk about the syllabus. Syllabus as a whole for mathematics. So I will just provide you the PDF also of this one. As you know, I already provided you previous one. Was that helpful? It was, right? Okay. So first portion is of calculus. Okay, you must be knowing there are three things in calculus. One is integration, one is application of integrals, and one is differential equation, right? Differential equation was in term one. So differential equation is a totally different thing. Now second you have vectors and 3D. In term one it's there or in term two it's there. Yeah, I know. Okay. Vectors and 3D. Okay, you have this one, and finally you have probability. Now, like I will tell you the important chapters which you need to study. Sorry, the important things that you need to study and which one you need to give more weightage and all those things. Okay. Yeah. So see, like this integration and whole calculus now will be of like 18 marks. You are getting my point. This will be of 18 marks. This vectors and 3D, these will be of 14 marks. And this probability will be of 8 marks. Now, in the recent CBSE sample paper, as you know, you have gone through the sample paper. You have not, na? So this integration was about 9 marks. This application of integrals was of 4 marks, and this differential equation was of 5 marks. Now, according to my intuition, like my intuition means what I guess is like this integration is again divided into two parts. One is indefinite and definite. So, like according to me, there will be two questions like which I feel. Two questions can be there, and one will be of indefinite and one will be of definite. Like long questions can be expected from this calculus part. Okay, this different application of integrals, it will give as you can see, it is a 4 marks question, so one question will be there according to me. Okay, and this vectors and 3D, they constitute of 1 marks question. मतलब यहाँ से 1 marks questions बनते हैं, like very easy questions. So let's not talk about that. Like you don't prepare like this कि I have told that, so you will prepare them. But like integration will be easy because hard topics are already taken away, like integration as a sum and all those things are taken away. So in next part I will discuss about the syllabus for the integration. Now this syllabus is for solely for integration. Okay, so the things that you need to study here is like only 9 forms of integration. Okay, there are only 9 forms you need to study in the CBSE syllabus. Now the first form is integration of dx divided by x square plus minus a square form. This is the first form. The second form is integration of dx divided by under root of x square plus minus a square form. The third one is integration of dx divided by under root of a square minus x square form. The fourth one is integration of dx divided by ax square plus bx plus c. Now the next one is like fifth, I guess. So it will be integration of dx divided by under root of ax square plus bx plus c. The sixth one is integration of px plus q divided by ax square plus bx plus c. You can note down all those things. Okay. Now, yeah, dx will be there. Like everything is with respect to x. Integration of px plus q divided by under root of ax square
plus bx plus again a dx will be there, and the eighth part is integration of under root of a square plus minus x square dx, and the finally ninth type is under root of x square minus a square dx. Okay, so these nine forms you need to study. You're getting my point? Yeah. So what I will do is I will teach you all those forms, and एक एक करके मैं सब सिखाता जाऊंगा. Okay, like how to solve each type of problems. So now, before starting integration, like you need to remember one thing. What thing you need to remember? Like you need to remember all the formulas, right? You need to remember all the formulas, because see, integrations is all about practice and like how many sums you practice. Okay, because there is nothing to teach in integration. Like there is nothing more to give a feel of integration. The more you practice, the more confidence you will gain in integration. You are getting my point? So first, let's I have not written the formulas anywhere. Like there are many things available on the net, like which are I could have pasted here. But what I need you to do is I need you to write the formulas with me. You take a copy or a paper. Just keep on writing the formulas which I write. Okay. So when I will give the formulas, I will not give you a sheet. I will like you will revise the formulas, your handwritten ones. Okay, the ones you will write right now. वहां से आप revise करोगे. Okay. Because once you write with me, once you write at your home, and once you revise all those things, I think it will be matlab, it will be fully memorized. ठीक है? And it will not be possible if I give you a sheet of paper like that, तो वहां से आप memorize नहीं कर पाओगे. It will be very difficult to memorize, like going on reading things. So like what is integration? Very easy thing. Integration is the inverse process of differentiation, right? Like ये बात मैं क्यों बता रहा? Why I'm telling you this is like there is a NCERT exercise जो वन है आप लोगों का इंटीग्रेशन का, that is based on this principle, like in inverse process of differentiation. Like I think it's exercise first or exercise second, I'm not sure. I think yeah, exercise first only. ठीक है? So it's the inverse process of differentiation. What I mean is, like suppose you are differentiating a function, means you are doing ddx of f of x, and you are getting f dash of x, right? Differentiate करने पर ये आता है. So when you will integrate this function like f dash of x with respect to x, you will get again f of x. So this is the basic thing you need to study. Okay. Yes or no? Yeah. Yeah. Any doubt from you? No, I guess. Very easy things, right? Now this integration is of two parts again. So integration. Achha, tell me what is the geometric meaning of integration? You don't know, right? Okay, no problem. Like many will say, like integration means area. Yes or no? Like so many people say, yeah, adding the whole thing, right? See, integration sign is like this, and some like s we write like this. So when we elongate the s on both the sides, we get something called integration, right? That's a very funny thing. So one is indefinite, and another one is definite, right? So when I tell about the geometric interpretation, like this can come as a 1 mark question, like what is the geometric interpretation? So what I need you to remember is like many people will say that integration as a whole means area, but this is actually wrong. ये सही नहीं है. This is not correct, because indefinite integration, this gives us family of curves. Like this geometrical interpretation is family of curves. Okay, and the definite integration gives us area. Now you might be confused that why so, like as a cube, right? So I can show you a general thing. Like suppose after integrating certain function, you are getting x square plus c. Like in definite integration, there is a constant. Sorry, indefinite integration there is a constant. In definite integration there is no constant. Like x square is there, right? Yes or no? So now when I say that, like when x square when c is equal to 0, how the graph will be? The graph will be like this. Yes or no? Yeah. When c will be equals to 1, it will be like going one step above. Like this will be like this. When c is equal to -1, it will be one step below. Like so, as you can see, it is giving us a family of curves. Yes or no? Like for variable c, we are getting variable graphs. So what is this? This is a family of curves. All those things are family of curves.
Now you might be confused or you might assume that sir ऐसा क्यों हो रहा है कि we are getting a family of curves, like area क्यों नहीं? I have taught this thing, like we have taken strips and all those things and we have found out area, yes or no? So now if I say that area कहाँ तक, like this curve is stretching till infinity, ये infinity तक जा रहा है, तो कहाँ तक आप area निकालोगे? Until we bound it in a region we cannot find the area, yes or no? समझ में आ रहा थोड़ा बहुत what I am trying to say? Like what I mean to say is, am I audible ना? Yeah. So what I am trying to say is, like if there is a curve like this, now if I tell that find the area, like integration मतलब area, so if the area I need you to calculate, so I must fix a boundary, like एक boundary मुझे होना चाहिए कि यहाँ से यहाँ तक निकालो या फिर you find it from here to here. But in indefinite integration there is no boundaries, yes or no? So from where till where you will find the area. So like indefinite integration gives us a family of curves. But in definite integration it is not so. Like in definite integration, like if you are having x square, it is like this, and we will be asked in the question that find from x is equal to a to x is equal to b. So you need that x is equal to a is here and b is here. So you need to find this area. So in definite integration, the geometrical interpretation is area, and in indefinite it's family of curves. Clear till there? Yes or no? Yeah. So see now more things are not there in this, like so much और कुछ बोलने लायक उतना है नहीं, like two properties I will say, like using this all will be solved. Like suppose you have two functions f of x plus g of x and whole integration dx, इसका पूरा इंटीग्रेशन निकालना है. So you can split that, right? ये very easy, it's very easy, ये आपने पहले भी किया है. Yes or no? This is the first property, and the second property is if there is some constant k times f of x integration dx, then you can take the k outside. Yeah. Till there any confusion, like interpretation wala term, you need to be clear with that, that why we are taking area in one and why we are not considering the area in one, the previous one. Clear है ना वो वाला? Because in indefinite integration we are not certain, we are not providing any boundary, and if there is no boundary how can area be there? समझ में आ रहा है? Yeah. So now take a piece of paper and go on writing the formulas with me. Like see, I could have saved my time also, your time also, I could have not done so many things, but that will help you to remember. Okay, believe me, you write nicely and you can see the difference yourself. Like ऐसा होता है ना कि याद नहीं रहता इंटीग्रेशन का formulas. Like when I was studying मुझे तो बहुत difficulties face करता हूँ. Like I faced a lot of difficulties in remembering the formulas. So you're ready with it? Paper and pencil? Yeah. So the first formula is integration of dx. So what will be integration of dx? It will be x plus c. Okay. Yeah. Now integration of x to the power n dx. It will be x to the power n plus 1 divided by n plus 1 plus c. This trick works, yeah, this trick works. Like once you are done with writing, you can remember 2 3 formulas by your own only. You will see the difference. Okay. Integration of e to the power x dx. It will be equals to e to the power x plus c. Okay. Done with this? Okay. Yeah. Next one is integration of a to the power x dx. What will be the value? A to the power x divided by log a to the base e plus, okay, integration of 1 by x dx is equal to ln mod x plus c. Like what is this ln? Ln means log by c, okay. हाँ. And you need to remember one thing here, that x must not be equal to 0 because denominator में x हम लोग लेते नहीं, okay. It becomes absurd. I told you. Oh, I didn't tell you. I told you in different class that infinity is a concept. There is nothing as such infinity. Okay. Yeah. So like integration of sin x dx is equal to minus of cos x plus. Done with this? Okay. Now the next formula is integration of cos x dx. You know the formula? Then you can tell with me. What will be sin x plus c. The next is integration of
secant square x dx. What will be it? Yeah, very good. Tan x plus c. Okay. Now next is integration of secant x tan x. What will be it? Like the first one will come out. Yeah, secant plus. Now the final is integration of cosec x cot x. Yeah, minus of cosecant x. Now see, you can remember it like this. Like when will be there is sec, like sec doesn't come out. Sec will always come out positively. Okay, these are sec is positive, and you can remember that once having co like these things, these are negatives. Okay, this is very helpful in remembering formulas. That's why I'm telling you. Like remember that one the things like co things come like negative थोड़ा सा याद रखना कि like we have sometimes you have confusion ना in mind या positive होगा कि negative होगा. So like if you are having a confusion like that and co type of thing is there, it will be negative. Getting my point? Yeah, got it. Now the next formula is integration of dx divided by under root of 1 minus x square. So it will be sine inverse of x plus c. Now next is integration of dx divided by 1 plus x square. It will be tan inverse of x plus c. Now you have integration of dx divided by x into under root of square minus 1. It will be equals to secant inverse x plus, getting my point? Okay, next one is integration of tan x dx. It will be log mod secant x plus c. Yeah, yeah, sure. Integration of cot x dx will be equals to log mod sin x plus c. Okay, integration of sec x dx will be equals to log mod sec x plus tan x plus c. And this can also be written as log of mod of tan of x by 2 plus pi by 4. Clear till now? You write these formulas two times, two to three times. You just write, go on writing. No need to remember. Just go on writing, and you will see that your formulas are mesmerized. Okay, sorry, mesmerized. Not it's memorized. Okay, yeah, pardon me. So now final formula is integration of cosec x dx will be equals to log mod of cosec x minus cot x c, which is also equal to log mod tan of x by 2 plus c. So you are like familiar with the formulas, right? You are already familiar because this is a revision type of class. So पहले भी पढ़ा होगा आपने, ऐसा नहीं है कि this is the first time you are studying. Yeah. So what I will write at the last is write all the formulas twice because this chapter is very important. Okay, so good way of writing. Anyways, why this chapter is important? Because देखिए, this is covering na three of your chapters. Like this calculus is everything. Like all these chapters are all about the formulas you read in integrations. You're getting my point. These three chapters will be requiring integration. In integration, will be requiring the formula of integrations. In application of integrals, will be requiring the integration formulas. In differential equation, also you will be requiring the integration formulas. So how many marks it will give you? It will give you 18 marks. You're getting it. More than 50% of your paper. Sorry, less than a bit of 50% because 40 marks is there. Okay. So it's very important. Like you can see the weightage of the calculus so much. Again, no, actually, I will not waste any more time here. So now let's come to exercise 7.1 of integrations. Okay. Exercise 7.1. You're having the book with you? Or no need to open. Like after that you can check or when I will give you some questions that time you can mark it. Okay.
Also, see in exercise 7.1, it is called method of inspection. Like one thing you can tell me कि sir जब हमने आपने physics मुझे पढ़ाया था, you could have gone with the NCERTs, but at that time you have not gone through line by line. Then why in this maths case you are going line by line with NCERT? Because see, in mathematics your 90% questions will be from NCERT. Believe me on that. Okay, which is not in the case of physics, because physics में थोड़ा इधर उधर का questions like from theory, and the main thing with NCERT is NCERT is not a organized book. Okay, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Like it's contain a lot of material in it, but it's not organized. मतलब haphazard type का things है. Okay, anyways, no need to worry on that. Like it will be helpful for sure. Okay. Now, like the method of inspection, I will teach you with taking questions which are from NCERT books only. So let's take a question which is integration of sine 2x dx. Like you are a bit off today. Like कुछ हुआ है क्या, mood वगैरह off? Yeah, you are a bit tensed about the exam. Yeah. Okay. I thought that something like you are not in that jolly mood today. So what does the method of inspection means? Like I told you na that integration is the inverse process of differentiation. So आपको यहाँ क्या करना है? What you need to do here is you need to find a differentiation जिसको sorry a term whose differentiation, like हम लोग इसको differentiate करेंगे तो हम लोगों को sin of 2x मिलना चाहिए. Okay. See, I'm telling you actually, process देख लीजिए how to do it. Like d dx of something must give us sin of 2x. Yes or no? Now we know that d dx of cos 2x should give us sin 2x. Yes or no? And there will be a minus sign here also, na? Like I will show you what the thing is happening. Like what is d dx of sin x? d dx of sin x is cos x, and d dx of cos x is minus of sin x. तो अगर हम लोग d dx of cos 2x करेंगे, so we will get a minus sign here. So we need to do this minus sign a positive one. उसके लिए हम लोग क्या करना है? इधर एक minus sign लगाना है. So it will be positive here. Yes or no? Yeah. Now see, this cos 2x का differentiation will again give a 2 here, right? It will give a 2 here by chain rule. Yes or no? So you need to eliminate this 2 also. So how can you eliminate this 2? Multiply each side by half. Yes or no? So what we are getting is like d dx of minus of 1 by 2 cos of 2x is giving us sin of 2x. मेरा अप्रोच देखिए, सी माई अप्रोच दैट हाउ आई एम अप्रोचिंग द क्वेश्चन. लाइक आपको अप्रोच करना आना चाहिए. ओके, फर्स्ट आई सॉ अबाउट द मेन टर्म कि पहले हमको sin 2x कैसे लाना है. उसके लिए तो वी नीड cos 2x. नाउ व्हेन वी आर गिविंग cos 2x वी आर गेटिंग माइनस ऑफ sin 2x. यस और नो? तो उस माइनस के लिए हमें क्या करना पड़ा? इधर भी एक माइनस देना पड़ा सो दैट इट बिकेम पॉजिटिव. नाउ बाय चेन रूल वी नो दैट व्हेन वी विल लाइक डिफरेंशिएट cos 2x वी विल गेट अ 2 हियर, और उसको भी हमें कंपनसेट कराना होगा, तो वी नीड अ हाफ हियर. तो अगर हम लोग राइट हैंड साइड में हाफ देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हाफ होना चाहिए. ये सुनो. तो अब देखिए, नाउ सी वन थिंग, लाइक हम लोग डिफरेंशिएट करने के बाद sin 2x मिल रहा है, तो sin 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये वाला मिलना चाहिए. ये सुनो. So what we can write is integration of sin 2x dx is nothing but minus of half cos 2x plus c. Yes or no? Now this I have solved ना. एक तो आपको करना ही होगा for my sake. Integration of sin 2x minus 4 e to the power 3x. How much time you need to do for this? Like कितना टाइम चाहिए आपको? Okay, I am giving you 2 minutes. Perfect है ना? Okay, let's start then. 3, 2, 1, and here you go.
Okay, very good. You are before time. Tell me the answer. Minus 1 by 2 cos 2x minus this one you are telling. Huh? I think you did a little bit of mistake. थोड़ा सा mistake किया आपने. Like this one is तो correct, but ये वाला part आपने थोड़ा सा mistake किया. This part is not correct. Okay, कोई बात नहीं. You will learn it. Yes or no? First one I am not showing because first one is already there in previous slide. I am only concerned about minus of 4 e to the power 3x. So इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? Integration of sin 2x dx minus 4 या फिर ऐसे नहीं करते हैं. Minus of integration of 4 e to the power 3x dx. Yes or no? So this one is there in previous slide. We are concerned about this thing, right? Now, as I've told, आपने वैसे ही किया क्या? Like, do a thing, d dx of something is giving us 4 e to the power x. Yes or no? Yeah, sorry, 4 e to the power 3x. Very good. Yes or no? So first we are concerned about the main function. What is the main function here? The main function here is this one. Yes or no? तो यहाँ पर हम लोग क्या पुट करें कि हमें e to the power 3x मिल जाए. We know that ddx of e to the power 3x is e to the power 3x. अब देखिए e to the power 3x तो हमें मिल गया. Yes or no? लेकिन अगर जब हम लोग e to the power 3x को करेंगे ना, by chain rule हमें और एक चीज मिलेगा. What we will get? We will get 3. Yes, we will get 3 into 3. So we need to compensate this 3. Now this 3 was not there with us. So how to compensate this 3? इस 3 को कैसे compensate करें? We need to multiply by 1 by 3. So अगर हम लोग 1 by 3 से multiply करेंगे right hand side, we need to multiply with the left hand side also. So this is the correct thing. Like ddx of 1 by 3 e to the power 3x is giving us like e to the power 3x by 4 e to the power 3x, and we need to multiply a 4 also because in right hand side 4 is there, in left hand side 4 must be there. Yes or no? Yes. So what the thing is coming is like ddx of 4 by 3 e to the power 3x is giving us 4 e to the power 3x. Yes or no? So first वाले के लिए sin 2x के लिए भी new half cos 2x, like this only it was there, and minus sign is already there, and for this part we have 4 by 3 e to the power 3x. We need to write this one which is there in the differentiation plus c. So this will be our answer. समझ में आया? Where you did the mistake? Like I knew you did the mistake here. Like 3 से multiply कर दिया आपने. लेकिन we don't need this 3. हम लोग को ये 3 नहीं चाहिए, तो हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है ना. Yes or no? So we need to compensate that with 1 by 3. So any doubt till now? Now this exercise is not that important. Like important exercise बाद में आएगा, तो I will tell you the important questions from NCERT. Yes or no? So now the next topic with us is methods of integration. Like थोड़ा सा confidence आ रहा है ना मैथ्स में? You are getting a bit of confidence. Like कर लोगे ना एग्जाम में? Okay. So there are three methods for integration. One is by substitution. Second is by partial fraction, and third one is by parts. Okay. तो आज हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? We will study by substitution today. Okay, because this is the most important thing. Substitution आना चाहिए तभी जाके partial fractions और by parts होता है, वरना like यही से maximum questions आपसे पूछे जाएंगे. Okay, so we will take a good time on substitution. So first is integration by substitution. No, no, I will take more hour. Is there any problem if I take like a long class today?
Okay, okay. Just give me some more time, like 30 minutes or 40 minutes more. After that, we will wrap up. Any problem on that? Like 11, I will wrap up. Okay. Hello, Pratik. Should I wrap up a bit early or 11 will be okay? You're fine with anything. That's good level of confidence. Okay, just I will let's tell you a bit about substitution. After that, we'll wrap up. Okay, no worries. So, see, the thing is, like in integration, like f of x dx will be there. Okay, and like in bookish language, you need to calculate x is as a function of g of t, like any function of t, and then you need to calculate dx by dt is equal to g dash of t. ठीक है? तो यहाँ से you know that dx will be equals to g dash t dt. Like this is a very common thing. Like ये bookish language में यही दिया हुआ है, हाँ या ना? Yes or no? So मैं जो बोलूँगा that is not on bookish language, that is a different thing. तो थोड़ा सा अलग होगा. Like see, if you are taking x square to be t, तो आपको क्या करना है? पहले dx by dy निकालना है. सॉरी dx by dt निकालना है. यहाँ पर t है ना? हाँ. So मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना. इसको ना डिफरेंशिएट करो, so what will be 2x, और x के टर्म में कर रहे हो ना, तो यू राइट इट dx here. This will be very easy. ठीक है? एंड इधर आप t को करो तो t को करोगे तो इट विल गेट dt. यस और नो? Like no need to do all those three steps. Yes, three steps करने का जरूरत नहीं. You just write 2x dx is equal to dt. Yes or no? Why this is helpful? Like ये helpful क्यों है? I will tell you. See, if you are calculating x square is equal to 2, then it's very okay. But if you are taking x square is equal to t square, then it will be very helpful. See, for x square you will doing, so you are doing 2x. Yes or no? And as you are doing x, so what you will write? You will write dx. Ayana. For t square you are doing, so you will write 2t. And again for t you will be writing. Easy na? Do one for my sake. We are taking x cube to be 2 to the power 4. Do it. Yeah, very good. तो यू आर सीइंग दिस हेल्पफुलनेस ना, ये हेल्पफुल हो रहा है ना. अब क्या कर रहे हो? पहले एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करो, दैट इज गिविंग अस 3x स्क्वायर, एंड लाइक यू आर राइटिंग dx. एंड आफ्टर दैट t टू द पावर 4 को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो 4t क्यूब दे रहा है, एंड फॉर t यू आर राइटिंग dt. इट्स हेल्पफुल एंड यूजफुल. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. उतना बड़ा प्रोसीजर नहीं चाहिए अभी हमको. ओके. नाउ वन मोर थिंग अबाउट सब्स्टिट्यूशन इज, लाइक फॉर एग्जांपल, अभी एग्जांपल ले पाता हो तो बहुत बढ़िया है. सो लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव इंटीग्रेशन ऑफ, for example, like cos x by sin x dx. Now by अभी आपको पता होगा कि ये cot x हो जाएगा, and then you can put on the formulas and all that, but I am teaching you substitution here, right? So आपको देखना होगा कि ऐसे एक चीज को आपको t लेट करना है, लाइक c1 फंक्शन, एंड उसका p लेट कीजिए जिसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी प्रेजेंट हो इंटीग्रेशन में, मतलब ये पार्ट में प्रेजेंट हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक sin x टू बी t, अगर मैं sin x को t लेता हूं, तो फिर इसका डिफरेंशिएट क्या होगा? cos x dx इज इक्वल टू dt. तो देखिए cos x dx आपके पास प्रेजेंट है ना. इस cos x dx इज प्रेजेंट, तो आप इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का जगह dt डिवाइडेड बाय sin x की जगह t. सो इट बिकम्स हेल्पफुल, राइट? या बोलिए. या वी विल गेट log t, दैट्स द आंसर. या log mod t विल गेट प्लस c, सो इट विल बी log t की जगह mod of sin x प्लस c, एंड यू सी द फॉर्मूला. यही था ना cot x का. सी. तो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग इज, लाइक ये एक इजी एग्जांपल है. लाइक ऐसा आप लीजिए जिसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी प्रेजेंट हो. लाइक वन मोर थिंग आई एम शोइंग यू. लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव इंटीग्रेशन ऑफ 2x plus 1 divided by square plus x.
ओके या टेल मी विच वन यू विल टेक टी, यहाँ पर आप टी क्या लोगे? व्हाई वी आर टेकिंग दिस टी? लाइक डिनोमिनेटर को क्यों टी ले? Yeah, we are getting the numerator, right? Yes, very good. So see, what we are doing here is like we are taking x square plus x is equal to t. So when we are differentiating it, we are getting 2x plus 1 into dx is equal to dt, which is present in the numerator. So it will be integration of 2x plus 1 dx is dt divided by x square plus x is t. So it will be ln mod t plus c. And in value of t, you will write x square plus x. So it will be ln mod of x square plus x plus c. Any doubts? अब आप बोलोगे कि सर विल दैट बी पॉसिबल कि इन एवरी क्वेश्चन इट विल बी वैलिड? देखो एवरी क्वेश्चन में 90% क्वेश्चन में ना डिफरेंशिएशन विल बी प्रेजेंट, ठीक है, डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा 95% क्वेश्चन, बट फॉर 5% क्वेश्चन विल नॉट बी प्रेजेंट, तो उसमें आपको लाइक थोड़ा सा बुद्धि लगा के दूसरा टाइप का सब्स्टिट्यूशन करना है, यस और नो? ओके ना? ओके, so now that when we are talking about substitution I will tell you some more substitutions, okay, like जो generally हम लोग करते हैं, we can write general substitutions. A common man like me uses these type of substitutions in the questions. Okay. So for number one, if you are having the expression as under root of a square minus x square, यहाँ पर हमारा substitution क्या होना चाहिए? x is equal to a sin theta और x is equal to a cos theta. Now you might be wondering कि ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? थोड़ा सा confusion आ रहा है ना कि why only these things? आ रहा है ना? कोई भी एक पुट कीजिए, like you know ना कि like अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जगह हम लोग क्या करेंगे, ए साइन थीटा पुट करते हैं तो इट विल बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. सो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉमन लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सो व्हाट इज दिस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा? कॉस स्क्वायर थीटा. सो इट विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. सो दिस विल बी ए कॉस थीटा. ऐसे बाहर आ जाएगा ना? हाँ या ना? इफ यू आर नॉट लाइक कंफर्टेबल यू कैन टेल मी, लाइक समझ में अगर नहीं आया तो. वेरी गुड. हाँ, सो दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस. लाइक आपको ऐसे देखना है कि x का जगह अगर हम लोग sin थीटा पुट करते हैं वी आर गेटिंग समथिंग लाइक a स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा. सो दैट इज इन आवर फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, लाइक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला का साथ क्लैश हो रहा है. ओके, लाइक ऐसा आप a को 1 मतलब यू रीड a स्क्वायर एज 1, आप a को 1 रीड कीजिए, इट इज 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब x की जगह क्या पुट करेंगे, हमें एक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला मिल जाएगा. इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि साइन या कॉस पुट करेंगे तो ठीक है. अब लाइक इन योर माइंड यू रीड a स्क्वायर एज 1, सो इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ठीक है. अब ऐसे देखिए कि एक्स स्क्वायर की जगह क्या होना चाहिए ताकि एक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला आ जाए, सो दैट साइन और कॉस, बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है. सो दिस इज दी लाइक मेन इंट्यूशन और दी अंडरस्टैंडिंग के. बहुत जन ऐसा बोलता है कि हाउ वी विल नो दैट ये सब्स्टिट्यूशन करना है और यही यही चीज करना था. लाइक टीचर लोग सॉल्व कर रहे थे, देन इंटीग्रेशन लुक्स वेरी इजी, राइट? इंटीग्रेशन इज टफ फॉर यू बट व्हेन समवन विल सॉल्व इट विल सी अरे यार यही था, यही करना था. सो यू माइट बी कंफ्यूज दैट व्हाई दैट थिंकिंग इज नॉट कमिंग इन माय माइंड. सो दैट थिंकिंग आई एम गिविंग यू कि ऐसे करके सोचना है कि सब्स्टिट्यूशन में कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि आपको बस बोलेगा कि किसी को एक टी पुट करना है, लाइक इन सम सॉल्यूशंस और इन सम बुकलेट्स यू विल गेट दैट या पुट x इज इक्वल टू टी. लेकिन आपको जनरलाइज जो मैं बताया कि क्यों टी पुट करें, बिकॉज दैट डेरिवेटिव मस्ट बी प्रेजेंट और दैट विल बी हेल्पफुल इन सम वे. ओके, तब प्रोसीडियर को देखिए एंड थिंकिंग को देखिए कि कैसे हम लोग को थिंक करना है क्वेश्चन में. ओके, नाउ लाइक सभी को आप जनरली घर में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो. सो आई विल जस्ट टेल यू. सो फर्स्ट वाज इफ देयर इज अंडर रूट ऑफ a square minus x square, so it will be x is equal to a sin theta और a cos theta. आप घर में इसको वेरीफाई कर सकते हो. ओके, अंडर रूट ऑफ a square plus x square, so it will be x is equal to a tan theta और a cot theta. ठीक है. The third one is under root of x square minus a square, so it will be x is equal to a sec theta और a
cosec theta. Now you can like generalize कि sec square theta minus 1 is tan square theta, cosec square theta minus 1 is cot square theta. ऐसे करके आप देख सकते हो. A को 1 रीड कीजिए तो क्या होगा, cosec square theta minus 1 is tan square theta. ठीक है. हाँ, लाइक वेरी जनरल थिंग्स, लाइक आप अगर फॉर्मूला याद है ना आपको कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा प्लस 1, ऐसे करके आप अगर फॉर्मूला अगर आपको याद है, so you can do that. Sorry, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 is sec स्क्वायर थीटा. ओके, तो अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री का आइडेंटिटीज याद है तो दिस फॉर्मूलाज विल बी वेरी इजी, लाइक आप देखते ही सब्स्टिट्यूट कर दोगे. यस और नो? या, अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द लास्ट वन. अगर आपके पास ऐसा है कि अंडर रूट ऑफ a प्लस एक्स डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स, और अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई a प्लस एक्स, ये वाला थोड़ा मतलब आपको याद रखने वाला है. यहाँ पर आपको क्या करना है ना, x इज इक्वल टू a cos 2 थीटा पुट करना है. जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे हमारे, वी विल सी द यूजेज ऑफ ईच ऑफ दी थिंग्स लाइक दिस. ओके, पर ये चार सब्स्टिट्यूशंस आपको याद होने चाहिए. ये सुनो. So now we will go into the exercise of integration, that is the substitution wala part, yeah, based on substitution. So like we will end up today here only. Okay, like you have your practical exams tomorrow. So exercise 7 point, yeah, just a second. PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, डोंट वरी ऑन दैट, यू जस्ट राइट दैट. वेरी गुड. दीज विल बी वेरी हेल्पफुल व्हेन यू गो ऑन दैट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल वाला पार्ट. ये चीज बहुत हेल्पफुल होगा आपको, ये सब्स्टिट्यूशंस वाला थिंग. ओके, एक्सरसाइज 7.2 इज बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन. तो लाइक ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा. सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग द फॉर्मूलाज व्हिच इज बेसिकली इंपॉर्टेंट फॉर दिस एक्सरसाइज. ओके, तो आप फिर से लिखिए. डोंट थिंक ये तो पहले पेज हम लोगों ने देख रखा है. आई विल नॉट राइट, यू राइट इट अगेन. ओके, so the thing we will be reading is integration of tan x dx will be equals to minus of log mod cos x plus c, which is also equal to log mod secant x plus c. The second one is integration of cot x dx is equal to log mod sin x plus. The third one is integration of secant x dx is equal to log mod secant x plus tan x plus c, and the fourth one is integration of cosecant x dx is equal to log mod cosecant x minus tan cot x plus c. क्लियर? जितना बार आप लिखेंगे उतना ही आपको याद होगा. ओके, हैव यू डन विद इट? Yeah, take your time, no hurries from my side. So the question that we will first take is integration of 4x plus 2 into under root of x square plus x plus 1 d of x. Now what we are doing is we are doing substitution. कुछ ऐसा substitution करना है जिसका डेरिवेटिव हम लोगों को दिख रहा हो. यस और नो? या, सो देखिए बढ़िया से, यू सी इट केयरफुली कि 4x plus 2 को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो विल गेट 4, जो कि लाइक एब्सर्ड थिंग, इट्स लाइक एब्सर्ड थिंग. हाँ या ना, कि 4 को क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं है ना. और वैसे अंडर रूट हम लोग का प्रॉब्लम कौन कर रहा है, प्रॉब्लम तो हम लोग अंडर रूट कर रहा है, तो ये कुछ हमारा हेल्प भी नहीं हो रहा है. यस और नो? हाँ ना. सो व्हाट विल डू इज विल ट्राई कि अगर इसको अंडर रूट को कुछ किया जाए, सो वी कैन डू इज वी कैन टेक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी. इसको टी ले लेते हैं, बिकॉज एक चीज आप देखिए, इसको अगर टी लेट करेंगे ना तो हमारे पास आएगा 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. अब आप बोलेंगे कि सर पहले ही आपने बताया कि इसका डेरिवेटिव, हम लोगों को तो डेरिवेटिव दिख नहीं रहा है, लेकिन आप अगर मन की आंखों से देखेंगे तो आपको डेरिवेटिव दिख जाएगा. हाउ? इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो इट विल बी 2x प्लस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी ऑफ एक्स. अब एक चीज आप देखिए, in this thing, like this 2x plus 1 d of x is nothing but dt, and this x square plus x plus 1 is t. Yes or no?
Yeah. So it will be 2 into integration of under root of t dt. Now can you solve this with the formulas which we have? Like ये ऐसा ही है ना, 2 into integration of t to the power 1 by 2 dt. So that will be t to the power n वाला form. So 2 into t to the power 1 by 2 plus 1 divided by 1 by 2 plus 1 and plus c. अब ये आप अपने से सॉल्व कर लेना ये वाला पार्ट, ये सुनो. सो दिस लाइक यहाँ पर कोई डाउट है कि अब तो समझ में आ रहा है कि वाई वी आर टेकिंग समथिंग एज टी जिसका डेरिवेटिव ऑलरेडी प्रेजेंट हो. लाइक मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका ऐसा दिख जाएगा. ठीक है. नाउ वन क्वेश्चन यू नीड टू डू बाय योरसेल्फ. सो द क्वेश्चन हियर इज integration of e to the power 2x minus 1 divided by e to the power 2x plus 1 d of x. How much time should I give? 2 minutes will be enough for this. Okay, let's start now. 3, 2, 1, and here you go. What the answer is coming, you can tell me. If you're not too sure, that's no issue. Yeah, I knew this problem you will be facing. Like you don't know what to take as t, right? Okay, I'm stopping the this. See, the thing I gave you this sum is like there is nothing as such integration of e to the power 2x dx. Like ऐसे integration आपको पता है क्या? We don't know it, right? Yeah, we only know integration of e to the power x dx. Yes or no? That is e to the power x plus c. हाँ या ना? Yes. So first we need to form e to the power x here because e to the power 2x हमें कोई help नहीं करेगा. They are not helping us in any way. So what we will do is integration of e to the power 2x minus 1. We will divide it with e to the power x. Numerator is done. We will do it the same thing with the denominator. देखिए अब हमें सब e to the power x के फॉर्म में मिल जाएगा. हाँ या ना? How? See, integration of e to the power 2x minus x, which is x, minus e to the power minus x. Like, let's write it properly. इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय x है ना, तो ये हो जाएगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x. ये समझ में आ रहा ना कैसे? डिवाइडेड बाय e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx. समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? अरे नथिंग, डिवाइड ऑल द टर्म्स. एक हमारे पास आएगा e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x, जो कि हो जाएगा हमारे पास e टू द पावर x, और एक होगा हमारे पास 1 बाई e टू द पावर x विच इज e टू द पावर माइनस x. आया ना? अब साइन के साथ पुट कर दो दोनों में. So this thing we are getting, yes or no? How did this interchange anyways? Okay. Now what we are having is integration of e to the power x minus e to the power minus x divided by e to the power x plus e to the power minus x. यही था ना? And d of x. अभी आप बताइए जरा किसको t लेट करें, इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी प्रेजेंट हो. Yeah, very good. See, if we take the denominator as t, then see e to the power x differentiation is e to the power x. E to the power minus x differentiation is e to the power minus x into minus 1 by chain rule into d of x is equal to dt, yes or no? So see, the thing that is coming is e to the power x minus e to the power minus x into dx is equal to dt. अब मन की आंखों से देखिए, this thing is present in the numerator, so differentiation तो हमारा present है, तो ये हो जाएगा integration of dt. ऊपर वाला पार्ट dt हो जाएगा ना, and below part we have considered it to be t, so ये हो जाएगा ln mod of t plus c. This will be equal to ln mod of e to the power x minus plus e to the power minus x plus c. इजी था या हार्ड था? टेल मी ऑनेस्टली. तो आई हैव टोल्ड यू ना हाउ टू टेक द टी. लाइक आपको तो जनरल मैंने बता दिया, आप देखिए किसका डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है.
दैट्स वेरी इजी टू फाइंड ना, थोड़ा सा आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा टी किसको लेना है. So now what I will do is, you have your NCRT, like open your NCRT book. So I told you ना about homework वाला part. होमवर्क मैंने बताया ना कि आपको कुछ नहीं करना, लाइक यू जस्ट नीड टू डू द थिंग्स व्हिच आई एम मार्किंग इन द एनसीईआरटी बुक. आपको पीडीएफ फॉर्म में मुझे भेजना है, लाइक बिफोर दैट नेक्स्ट क्लास आई नीड दैट इन माय व्हाट्सएप, लाइक ओके. So the first thing that is important is example 5. Like not all the four sums, you need to do only 3 and 4. अब बोलोगे कि सर ये कोई बात हुआ, लाइक एग्जांपल ये प्रेजेंट है ना सोल्यूशन, नो वरीज. एग्जांपल अगर सोल्यूशन प्रेजेंट भी है, यू मेक इट ऑन अ कॉपी एंड यू जस्ट शो इट टू मी. ओके, मार्क इट. ऑल राइट. थर्ड एंड फोर्थ. ओके, नेक्स्ट. एग्जांपल 6, ओनली द थर्ड वन. ठीक है. नाउ जंप टू द एक्सरसाइज वाला पार्ट, एंड फ्रॉम हियर यू नीड टू डू क्वेश्चन 20, 24, 28, 32. कितना मार्क कीजिए पहले. 20, 24, 28, 32, and then 33, 34 and 35. आई विल सजेस्ट कि आप सब कीजिए, लेकिन ये बस आप मुझे जनरली करके दिखाइए कॉपी में. ओके, या डू 36, 37 ऑल्सो, दीज आर ऑल्सो गुड सम्स. ओके, लाइक इफ टाइम परमिट्स आप सब कीजिए, लेकिन दीज आई वांट इन अ पीडीएफ फॉर्मेट. ठीक है. आप सब कीजिए, प्रैक्टिस आप सब कीजिए, लेकिन दीज आई वांट यू टू सेंड इन माय व्हाट्सएप. गॉट इट. ओके, सो आई होप टुमारो यू आर हैविंग योर एग्जाम्स. आई विल नॉट टेक मच टाइम हियर. जस्ट get go and prepare for your practical examinations. एंड नेक्स्ट अगर कोई भी सम नहीं होता है तो यू कैन जस्ट पिंग मी ऑन व्हाट्सएप कि सर ये सम मेरे से नहीं हुआ. ओके. And in next class we will again do physics, like in alternate days it will go on, like one day maths, one day physics. In next day, like which is most probably tomorrow, we'll do physics. ठीक है. Yeah. So I hope you understood a little bit about integration and a confidence is coming. Yes or no? थोड़ा सा आ रहा है ना. थोड़ा सा रिवाइज कर ले क्या क्या पढ़ा हमने, एंड देन वी विल जस्ट एंड द क्लास. थोड़ा सा बस रिवाइज कर लेते हैं. तो फर्स्ट वी रेड अबाउट द सिलेबस. क्या आ रहा है सिलेबस, आपको बढ़िया से याद होना चाहिए. आफ्टर दैट लाइक ये फॉर्म्स आपको पढ़ना है. लाइक अभी तक मैंने फॉर्म्स कुछ शुरू नहीं किया है, लेकिन इवेंचुअली देयर विल बी 2 more क्लासेस ऑफ इंटीग्रेशन, एंड इन दैट यू विल बी सीइंग दैट लाइक ये सब फॉर्म्स आपने खुद कर लिया. ओके. लाइक वी नो दैट इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ये सब हमने देखा. आफ्टर दैट वी सॉ दैट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ कर्व, एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स एरिया. और हमने ये देखा कि अगर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है तो देयर इज नो बाउंड्रीज, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग फैमिली ऑफ कर्व्स. यस और नो. Now we saw these properties, which I think is clear for you. Then we wrote all the formulas by hand so that it becomes clear and it becomes like printed in our mind. Like all these formulas we wrote. And after that, we went on to exercise 7.1, which is the method of inspection. And we saw that how to do that by process. ठीक है. And this sum you did by your own. Like अपने आपको मैंने बताया कि कैसे like इसको अप्रोच करना है. So this thing also is done by us. मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन हमने सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा हम लोग पढ़ लिया, थोड़ा सा हमने पढ़ लिया, राइट. थोड़ा बहुत हमने सब्स्टिट्यूशन के बारे में जान लिया. लाइक नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस भी पढ़ेंगे एंड बाय पार्ट्स भी पढ़ेंगे. देन आई टॉट यू अबाउट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पे हमने देखा कि सब्स्टिट्यूशन करना कैसे है, लाइक दी हाउ टू डू इट. लाइक सब्स्टिट्यूशन तो कोई भी सिखा सकता है, लेकिन व्हाट इज द थिंकिंग प्रोसेस बिहाइंड डूइंग सब्स्टिट्यूशन, आपको मैंने 2 एग्जांपल्स देके समझाया. यस और नो. Then we went on to general substitutions. These are very very important. These things are very 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 important, like very to the power infinity important. Okay, so you need to remember all those things. एक बार मेरे साथ दोहराइए कि अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, सो इट विल बी x इज इक्वल टू a sin थीटा और a cos थीटा.
इफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा अंडर रूट में से एक्स विल बी ए tan थीटा और ए cot थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए एक्स इज इक्वल टू ए sec थीटा और ए cosec थीटा। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, लाइक इसके लिए मैं सूरज बना देता हूँ, लाइक तारों से कुछ नहीं होने वाला। So like if this form is there, a plus x divided by a minus x or a minus x divided by a plus x, so we will take x is equal to a cos 2 theta. Okay, any doubt here? और मैंने आपको ये भी सिखाया कि आप हाउ विल यू रिमेंबर दिस। रिमेंबर करने के लिए आपको a की जगह 1 इमेजिन करना और x की जगह आप जो भी ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी पुट कर रहे हैं वो पुट, सॉरी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पुट कर रहे हैं वो आपको बोलना है, राइट। लाइक a की जगह हम लोग 1 पुट करते हैं, लाइक 1 इमेजिन करते हैं तो इट्स लाइक 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर हम लोग साइन और कॉस पुट करेंगे तभी हमको कोई फॉर्मूला मिलेगा, यस और नो? Yeah, similar happens for a square plus x square and x square minus a square also, like we need to know about the, like आपको अगर वो टाइम में क्लिक नहीं कर रहा कि लाइक क्या पुट करना है तो a को 1 मान लीजिए और x स्क्वायर की जगह कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पुट कीजिए, सो दैट इट गिव्स यू अ आइडेंटिटी, ठीक है। एंड व्हाट आर द थ्री ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज वी यूज, लाइक बेसिकली वी नीड थ्री ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये यूज करने के लिए बेसिक सब्स्टिट्यूशंस के लिए, ओके। लाइक आई विल टेल यू, लाइक वन इज वेरी इजी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पता ही होगा आपको। Like second is secant square theta minus tan square theta is equal to 1. Yeah, cosecant square theta minus cot square theta is equal to 1. So these are the three trigonometric identities जो आपको वहां पे चेक करना है, राइट, बिफोर दी सब्स्टिट्यूशंस। वरना एक चीज तो है ही, रट लीजिए। इफ दैट इज नॉट द थिंग, अगर आपको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, सो व्हाट इज दिस, रट लो, ओके, ठीक है। And after that we went on to the like exercise 7.2, and these are the important formulas that we will be using in this exercise. And after that we went on to this question where we saw that yes, ऐसा हो रहा है कि हम लोग जिसको t ले रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी प्रेजेंट हो रहा है, and what I said that 95% क्वेश्चंस आपका ऐसे हो जाएगा, ओके। एंड आफ्टर दैट ये हमारा थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा अलग था, लाइक e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन हमें पता नहीं था, दैट्स व्हाई वी कन्वर्टेड इनटू e टू द पावर x वाला फॉर्म, ओके, ठीक है। सो फॉर दैट वी डिवाइडेड इट बाय e टू द पावर x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। एंड आफ्टर दैट वी सॉल्व्ड इट, लाइक यहाँ पर भी आपने देखा कि सब्स्टिट्यूशन का डिफरेंशिएशन ऑलरेडी प्रेजेंट था, ये सुनो। Now I think the class will be over here because you have your practical exams tomorrow, and after that we mark the important things. Like आपको पता ही होगा जो जो मैंने मार्क कराया है, like I'm marking once again this exercise वाला part. Like what I said was 20, 24, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Okay, आपको ये क्या करना है, आपको हमको WhatsApp पे ये भेजना है, ओके, बाय PDF बना के, ठीक है, ओके, फाइन ना? Yeah, so let's end our class today then. Okay, all the best for your exams.